यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जो ये रेफरेंस फ़ोटो है, तो सेम साइज़ में जो है ये ड्राइंग कॉपी में भी हमने ग्रिड ड्रॉ कर लिया, लाइन भी ड्रॉ कर लिया। सेम नंबर, सीरियल नंबर भी यहाँ पर दिया गया है। अब रेफरेंस फ़ोटो का कौन सा जो है पार्ट कहाँ पे है, आउटलाइन का कौन सा पार्ट कहाँ पे है, वो हमें ढूँढना है। मतलब इस बॉक्स में जो पार्ट जो चीज़ें हैं, वो वही बॉक्स हमें अपने इस पेपर में ढूँढना है और वही चीज़ हमें यहाँ पे ड्रॉ करना है। मान लो ये जो इस बॉक्स में जो चीज़ भी है, इसके आसपास जो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल जो लाइन है, उसको कोई भी लाइन आप ले सकते हो। ऊपर से ये वाला लाइन और इस तरफ से ये वाला लाइन। ऊपर से इस लाइन का नंबर है 8 यहाँ पे लिखा हुआ है, और इस तरफ से इस लाइन का नंबर है 10। तो वही हमें ये सेम लाइन हमें यहाँ पे भी ढूंढना है। यहाँ पे जो ये वाला है 8 और नीचे से ये वाला है 10। तो ये दोनों इस तरह आते हुए यहाँ पे क्रॉस किया है इस जगह पे। तो ये वाला जो क्रॉस पॉइंट यहाँ पे है। अब हमें ये जो आउटलाइन किस हिसाब से गया है उस हिसाब से हमें ड्रॉ करना है। मतलब ये जो पार्ट है आउटलाइन आँखों का, तो ये इस तरह जाते हुए इस जगह पे क्रॉस किया है। तो इस क्रॉस पॉइंट से यहाँ का डिस्टेंस आपको देख लेना है कितना होगा, हमें मार्क करना है पहले। उसके बाद करते जाना है हर एक पार्ट को, इस हिसाब से ऑब्जर्व करना है कौन सा पार्ट बॉक्स का कौन सा पार्ट कहाँ पे है, और ढूंढ के आपको इस तरह से आउटलाइन को ड्रॉ करना है। और यही प्रोसेस आपको एक स्टेप बाय स्टेप करते जाना है। इसी हिसाब से मैं हर एक पार्ट को ढूंढ के ड्रॉ करूँगा। तो